Welcome all. This is creative thinking workshop. So we'll start with the techniques. So one of the another very simple technique is creative pause. तो किसी को लगेगा ये pause क्या होता है, right? Pause का मतलब क्या होता है? Pause का मतलब होता है रुकना. Take a breath. Stop for a minute. Yeah. हम भागते रहते हैं. We are busy in the thing that we do for hours and for stretches of time. But हम रुकते नहीं हैं, रुकना भूल जाते हैं. So creative pause is just a reminder. और यू कैन से वेरी सिंपल टेक्निक. इतना सिंपल है कि ये टेक्निक भी है क्या ऐसा लगता है, राइट? कि पॉज में क्या टेक्निक होगा. सो इट इज व्हाई इट इज लिस्टेड एज वन ऑफ द टेक्निक. क्या ये भी कोई टेक्निक हो सकता है कि हम रुके सिर्फ एक सेकंड, पूछे कोई क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन, राइट? बट इट इज अ वेरी पावरफुल टेक्निक. सो पेइंग अटेंशन इट कैन बी कॉल्ड एज, और यू जस्ट स्टॉप अ पॉज. तो इसमें क्या होता है, द पावर ऑफ पॉज. इट इज वेरी सिंपल टेक्निक बट इट इज एक्सट्रीमली पावरफुल. नॉट दैट इट डजंट make impact. It does make impact every time because you take a pause. So ideally creativity is not a technique limited word. Okay? Want to become creative thinkers, right? It should become a mental habit. How you approach problems, how you approach tasks, how you approach your day-to-day life should itself become creative. Should itself become where you jump out of the boundaries. You are able to go deeper in everything. You are able to see alternatives to a problem, and you are not stuck at a limited approach. You know the power of pause. You know the power of sleeping on a problem. You take a break, go outside, have a coffee, and then come back to the problem. So this is creative thinking attitude. This is your style. This is your second nature, right? So power of pause is more like a habit rather than a technique. So power of pause is more like a habit. It should become a mental habit for anyone who wants to become creative. It is very simple, as said, but it requires motivation and some proactivity from your side, because no one wants to pause because we are in a hurry. Right? Because we have deadlines, we have timelines, we have people chasing us most of the times. We have goals chasing us, timelines chasing us most of the times. So we don't get to pause. So थोड़ा सा deliberate effort लगेगा आपको ये डालने में. अभी हम क्या करते हैं? Let's do something simple exercise. These are day-to-day items, right? There is a guitar, there is a ball, there is a watch, and there is a computer. तो आप लोगों को इसमें से कोई भी एक आइटम चूज करना है. All of you can pick one of these items जो भी आपको अच्छा लगता है अपने माइंड में, और उस पर 1 मिनट पॉज लेकर सोचना है आउट ऑफ द बॉक्स. यू कैन फील फ्री टू थिंक अबाउट एनीथिंग. लाइक आप लाइफ में 1 मिनट पॉज लेके इस आइटम के बारे में कुछ सोच रहे हैं. एज सिंपल एज दैट. नथिंग स्पेसिफिक. यू आर टेकिंग द क्रिएटिव पॉज. सो दिस इज द पॉज एक्सरसाइज. तो हमने देखा कि क्रिएटिव पॉज का भी कितना पावर है. एक छोटा सा पॉज यू कैन टेक, लाइक व्हेनेवर यू आर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम, व्हेनेवर यू आर वर्किंग ऑन अ टास्क, or whenever you are routinely spending hours and hours or minutes and minutes on a particular thing and you're not getting anywhere. So it's worthwhile to take a pause. It's worthwhile to take a break. It's worthwhile to somebody is talking too fast, right? And then you stop it. अरे भाई मेरे को नहीं समझा, 1 second. This is also a pause. A 2-second pause is, or 10 seconds pause is also a pause, because it helps you understand that statement better. Okay? So pause is a simple word. Creative pause is a simple technique, but it's very powerful. Now let's move on to the next simple technique. Another simple technique is focus. फोकस भी सबको लगेगा अरे ये क्या टेक्निक होगा, मतलब हम दिन रात करते ही है फोकस, राइट? विदाउट फोकस यू कैनॉट लर्न, विदाउट फोकस यू कैनॉट स्टडी, विदाउट फोकस यू कैनॉट डू एनीथिंग. बट एब्सोल्युटली यू आर राइट, फोकस इज पार्ट ऑफ वन ऑफ द क्रिएटिव टेक्निक्स एज वेल, राइट? सिक्स थिंकिंग हैट्स जितना डेलिबरेट नहीं है ये. इट्स लाइक क्रिएटिव पॉज. इट्स लाइक अनदर मेंटल हैबिट दैट यू हैव टू डेवलप, द हैबिट ऑफ फोकस. नाउ लेट्स सी हाउ इट इज अ टेक्निक. सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोकस. यू कैन कॉल इट एज जनरल पर्पस फोकस or specific focus. Okay, you can focus on anything. You can choose to focus on almost about anything. You in that your purpose could be improvement of something. Jesse, you saw this pause exercise, right? You were thinking about guitar, or you saw the clock. So what Vijaya shared could be a specific purpose with which you can start the problem. Like you're given a watch to see the picture of the watch, and then you have to think of the improvements, how you can improve the watch. Just precisely what you shared. Similarly, it could be a problem solving that you're not getting answer for. It could be another opportunity. You are looking for an alternative definition. You want to rephrase a problem. You want to solve the underlying problem. इन सब चीजों के लिए आप फोकस का उपयोग कर सकते हैं. आप रुक सकते हैं वहां पे, पॉज ले सकते हैं और फोकस कर सकते हैं. ठीक है, बोथ आर टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव टेक्निक्स. आप देख सकते हैं देयर आर सम एग्जांपल्स गिवन. अभी समझ में आ जाएगा जल्दी से. जनरल एरिया टाइप फोकस कौन कौन से हो सकते हैं? आई वांट सम न्यू आइडियाज इन द एरिया ऑफ रेस्टोरेंट्स. आई वांट सम न्यू आइडियाज इन द एरिया ऑफ telephones, right? Telephones भी कितना improve हो गए. We talk into, not just talk into phones now, we do everything with our phones, right? There are, you can look for ideas for the supermarket, or you can look for ideas to reduce the cost of company management or training or anything. तो दो एग्जांपल्स यहाँ पे जनरल के हैं, दो एग्जांपल स्पेसिफिक के हैं. राइट वाले जो एग्जांपल है वो स्पेसिफिक फोकस है आपका. इट्स स्पेसिफिक फोकस एग्जांपल कि आप, बिकॉज यू हैव आइडियाज, यू आर लुकिंग फॉर आइडियाज टू स्पीड अप द checkout process in the supermarket. But there are so many other things in the supermarket. Do you agree? Put the items in the aisle. They have to purchase. They have to
make their customers happy. They have to send discounts. There are 1,000 things that supermarket has to do, not just account. So focus on show you here or focus on. So these are just were some examples of focus. So इसमें हम लोगों ने technique नहीं किया exercise, but we saw some examples. Now let's move. I think there are some more examples here. How can we reduce shoplifting? So it's a specific focus. You can choose to spend time on. जैसे मैंने बताया कि क्रिएटिव पॉज एक टेक्निक है. तो जब हम कहते हैं टेक्निक है तो इट्स अ टेक्निक, मतलब ऐसा नहीं है कि सो देयर इट्स अ ग्रुप एज वेल एज इंडिविजुअल टेक्निक. कि आप 12 बजे बैठ गए और 12:30 तक आपने टाइम इन्वेस्ट कर लिया. जैसे 1 मिनट हमने अभी रखा, तो कुछ टेक्निक्स ऐसे हैं जिसमें आपके 1-2 मिनट भी काफी है, और कुछ टेक्निक्स ऐसे हैं जिसमें आप 10-15 मिनट ज्यादा देर भी आप टाइम स्पेंड कर सकते हैं. इफ यू वांट टू रियली जनरेट अ लॉट ऑफ आइडियाज, और इफ यू रियली वांट टू be super smart in that, or it's a very critical problem you want to solve. ठीक है, so it's up to you how much time you spend, but even 1 minute is worth, as you saw now. So even एक simple technique के साथ आपका 1 मिनट भी it's worth good in creative world. The problem is we don't deliberately keep time, because हमें क्या लगता है creativity is for designers, right? हमने लास्ट टाइम myths देखे थे कुछ फर्स्ट प्रेजेंटेशन में कि भाई क्रिएटिव ग्राफिक वालों का काम है, राइट? लेटरल थिंकिंग हमारा काम नहीं. तो इट्स अ मिथ, मतलब, राइट? So there is a technique. There are so many techniques. आप उसको खुद लेकर के 1 मिनट में आप क्रिएटिव बन सकते हैं, and you can find out ideas about it. Focus is one example. Now purpose task. I want to design a flat refrigerator. कोई बोल सकता है, right? I want to communicate with a million users. A million bestseller लोग लिखते हैं. तो कैसे पहुंचता है वो million? Because they have a focus, right? Because they focus लेके आप बैठोगे कि आधा घंटा मेरे को ये आइडिया चाहिए कि how do I make my book a bestseller or in the million list or a New York Times list, right? So you will get ideas. So this is one technique. These techniques can help. दिस इज थर्ड टेक्निक. अनदर, अब थोड़ा डिफिकल्टी की तरफ हम बढ़ रहे हैं. पॉज बहुत सिंपल था, फोकस भी सिंपल है, सुनने में सिंपल लगता है, पावरफुल है, बट क्रिएटिव चैलेंज इज अनदर टेक्निक. चैलेंज में हम क्या करते हैं, वी बेसिकली चैलेंज समथिंग. ठीक है, चैलेंज में आप यू कैन सिंपली एक्सप्रेस एज व्हाई एनीथिंग इज बीइंग डन द वे इट इज बीइंग डन. यू जस्ट चैलेंज इट. डोंट टेक इट फॉर क्रिटिसिज्म. इट्स नॉट क्रिटिसिज्म. क्रिटिसिज्म में आप ब्रेक करते हैं किसी चीज को, राइट? you find critique with something, you find negative points precisely, maybe. But challenge is more like a creative challenge. Why do we do things the way we do them? Why is it done this way? If you don't ask this question ever and you approve of any idea or problem, then you may get into a problem later, right? So this is another powerful technique. Let's move on. Why and why again. तो उसी टेक्निक का पार्ट है ये. So there is something called as 5 whys. Why it happens, मतलब ऐसा क्यों होता है? No one challenges something. Like there were स्क्वायर शेप व्हीकल्स, तो किसी ने चैलेंज नहीं किया कि कुछ और शेप हो सकता है क्या? व्हाई इट डज हैपन? बिकॉज देयर आर कंटिन्यूटीज प्रॉब्लम्स. यू कैन सी देयर इज अ कंटिन्यूटी ऑफ नेग्लेक्ट, कि कोई चीज बन जाती है एंड इट सॉल्व्स अ प्रॉब्लम, तो फिर तब तक जब तक वो प्रॉब्लम नए सिरे से नहीं आती है तब तक लोग उसको नेग्लेक्ट करते हैं. दैट इज कंटिन्यूटी ऑफ नेग्लेक्ट. कंटिन्यूटी ऑफ लॉक इन होता है. लॉक इन आप वेंडर के साथ या किसी प्रोसेस के साथ लॉक इन हो जाते हैं. यू डोंट वांट टू हर्ट पीपल, यू डोंट वांट टू चेंज सिस्टम्स, इट्स अ बर्डन, राइट? तो हम फॉलो करते हैं जैसा भी बनता है, जो भी चीज है. Continuity of complacency and continuity of time sequence. So creativity helps you to break free. You can block the existing path. जैसे पानी बहता है, मैंने बताया था लास्ट टाइम एग्जांपल. इट्स लाइक आवर ब्रेन, सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम. प्लेटो पे या फ्लैट सरफेस पे पानी जब गिरता है फर्स्ट टाइम, तो इट मेक्स अ पाथ विद द डस्ट. इट टेक्स अ पर्टिकुलर स्ट्रीम ऑफ चैनल. और दूसरी बार आप पानी के ड्रॉप्स डालेंगे तो इट फॉलोज दैट पाथ इटसेल्फ, फॉलोज द पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस, सेल्फ ऑर्गेनाइज करता है. तो हाउ डू यू ब्रेक फ्री? यू ब्लॉक इट. There are 3 words here: block, escape और drop it. तो आप कोई चीज किसी पुराने तरीके से करते थे तो यू कैन ईदर ब्लॉक इट. आपने वो रास्ता अगर ब्लॉक कर दिया पानी का, तो वो दूसरे रास्ते से जाएगा. फिर एस्केप इट, मतलब यू चेंज द गेस्टार्ट, चेंज द परसेप्शन. ये लेके करना है, नहीं इसके बिना करना. देन ड्रॉप इट और स्टॉप. विल सी सम एग्जांपल्स फॉर दैट. So this is another technique. Just remember that this is another powerful technique. You creatively challenge something, you ask why.